So hello everyone, this video is really important for all the May 24 qualified chartered accountants because in this video I'm going to be discussing end to end regarding the small campus placements. What is the procedure, how you're going to be applying, what are the steps, who are eligible, and the most important, what all things are needed when you want to prepare for this interviews. Okay, so now let us come to the first timelines, and the first most important thing is who is eligible for the small campus. सर ये स्मॉल कैंपस के लिए कौन एलिजिबल है वेरी वेरी सिंपल हु इज एलिजिबल so let me show you some of the guidelines which states that who is eligible for the small campus. Now what does it says? It says that this is a brochure in the detail which is issued by ICAI, so I'm using this out. It says in the event of not being selected in a bigger center, you can give a consent for attending the interviews of 4 other organizations in the small centers. That is what ICAI have stated. So let me just explain you it in a very simple words. It means if you have not got placed in the big center, अगर big center में आपको कोई भी कंपनी में जॉब नहीं लगी है, right? If you have not got placed in any of the big centers, then you are eligible for a small campus placements. Then you are eligible for a small campus placements. मतलब कि सर in short मैंने सबसे पहली बात, right? Imagine that this is my portal. I have just logged in into my portal. And once I go here in the company result section, just wait for a fraction of second. Once I go into my company result section, अगर मेरे को result section में मान लो या तो कोई कंपनीज है ही नहीं या तो फिर okay, सॉरी हाँ, either I am not able to see any of the company. So in my company result section ये इस तरीके का आपको result section दिख रहा है. यहाँ पे अगर आपको कोई भी कंपनीज नहीं दिख रही है, नंबर 1. नंबर 2, सर मैंने कोई कंपनी को कंसेंट दिया ही नहीं, नंबर 2. सर नंबर 3, अगर मैंने कंसेंट दे दिया सर बट मेरे को मन नहीं है उस कंपनी में ज्वाइन करने का या मेरा पोर्टल ब्लॉक हो गया है. पोर्टल कब ब्लॉक होगा? द टाइम यू गिव अ कंसेंट योर पोर्टल इज ब्लॉक्ड. सर अगर मैं लॉग इन नहीं कर पा रहा हूँ, पोर्टल ब्लॉक हो चुका है, मेरे को कोई कंपनी ने सिलेक्ट कर लिया था, मैंने कंसेंट दे दिया, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? द आंसर इज बिग नो, बिकॉज ICAI हैव ऑलरेडी पुट एन एफर्ट टू हेल्प यू आउट गेट अ जॉब, राइट? और आप उसे ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो उसके लिए आप स्मॉल कैंपस के लिए एलिजिबल नहीं हो. मतलब क्या कि सर मेरे को कोई जॉब मिली ही नहीं बिग सेंटर में तो मैं एलिजिबल हूं. वेरी वेरी गुड सर. सर अब बताइए क्या होगा स्मॉल कैंपस में और हाउ द प्रोसीजर इज गोना बी, व्हाट आर द टाइमलाइंस, व्हाट आर द डेट्स. लेट मी जस्ट गो थ्रू इट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. Okay, so let us come to the dates part and understand it in a detailed manner. I would be happy if you guys can draw the chart parallelly. Now, देखो same steps and the procedures are there, but let me just come to the timeline first. It says the last date for an organization registration. देखो कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, this is a company's registration. Now please understand ICAI have issued some of the list of the companies which are gonna be coming to the campus placements. So today I'm making this video out. I don't know which date you will be seeing this video out, but today the ICAI has issued this list. This list is updated till which date? It is updated till 12th of September 2024, right? 11:04 AM तक ये लिस्ट अपडेटेड है. बट व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर कंपनीज टू कम फॉर द कैंपस प्लेसमेंट्स? लास्ट डेट कब तक की कंपनीज रजिस्टर कर सकती है, राइट? लास्ट डेट इज 23rd of September. ओके सर, ओके सर. तो बिग सेंटर्स वर 9 बिग सेंटर्स. द आंसर इज यस, 9 बिग सेंटर्स थे. हाँ जी सर, 9 बिग सेंटर्स थे. हाउ मेनी स्मॉल सेंटर्स आर देयर? इफ आई टेक अ टोटल, आई थिंक 20 स्मॉल सेंटर्स आर देयर. 20 टोटल स्मॉल सेंटर्स हैं. कंपनीज 23 तारीख तक के रजिस्टर कर सकती है, राइट? कंपनीज के लिए ऑफकोर्स द बेसिक डिटेल्स ऑफ अ फी स्ट्रक्चर एंड ऑल द डिटेल्स आर मेंशन्ड हियर इन द ब्रोशर कि कंपनीज को कितनी फीस देनी पड़ेगी इफ दे वांट टू कम टू द बिगर सेंटर्स. इसमें बिगर नहीं मतलब इफ दे वांट टू कम टू सम ऑफ द सेंटर्स योर दे नीड टू पे 50,000. कानपुर आना है 25,000. बाकी इसके लिए 10,000 और 20,000 रिस्पेक्टिव डेज और फीस दी गई है. आई हैव ऑल्सो सेट दैट आउट मिनिमम क्राइटेरिया फॉर CTC. मिनिमम कह रहे हैं कि 9 लाख CTC देना पड़ेगा ऑल कैंडिडेट्स को एंड 7.2 लाख फॉर ऑल द कैंडिडेट्स. इट्स अगेन अ CTC कंपोनेंट. नाउ ठीक है सर, ये चीज मुझे समझ में आ गई. अब मेरे लिए डेट्स कौन सी इंपॉर्टेंट है? दैट इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस. द फर्स्ट इज लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन शॉर्टलिस्टिंग बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ये कंपनी के लिए, राइट? तो ये मेरे लिए इतने रिलेवेंट नहीं है डेट्स. नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज देयर, सर 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 first thing for case number 1, sir I have not appeared for a big center. I have not appeared for a big center. Can I sit for the small center? Can I sit for the small center? The answer is yes. आप small center के लिए बैठ सकते हो, but you need to fill out a form. आपको फॉर्म फिल आउट करना पड़ेगा. दैट इज नंबर 1. सर डू वी नीड टू फिल आउट अ फॉर्म अगेन फॉर अ स्मॉल सेंटर? डू वी नीड टू फिल आउट अ फॉर्म अगेन फॉर अ स्मॉल सेंटर? द आंसर इज नो. वी डोंट नीड टू फिल आउट अ फॉर्म अगेन फॉर अ स्मॉल सेंटर. तो सर क्या करना पड़ेगा? वेरी सिंपल, नो नीड टू डू एनीथिंग. यू जस्ट नीड टू गो टू योर पोर्टल आउट, राइट? आपको अपने पोर्टल पे जाना है एंड यू विल बी एबल टू सी द डिटेल्स इन द प्रोफाइल विच इज फिल्ड बाय यू.
right? You will be able to see the details in the profile which is filled by you. That is something you just need to see it out. बाकी कुछ नहीं करना है आपको. Sir. Third thing, sir, can I change my center out? Can I change my center out? Sir, मैंने जब फॉर्म फिल किया था, when I was filling my form, राइट, जब मैंने फॉर्म फिल किया था, इस तरीके से मेरा कोई फॉर्म भर रहा होगा. मैं आपको मेरा फॉर्म दिखा देता हूँ. मान लो दिस इज व्हाट माय फॉर्म इज. सर, इस तरीके से मेरा एक फॉर्म दिख रहा था. सर, मैंने जब स्मॉल सेंटर चूज किया था, मैंने थाने चूज कर लिया था, विच इज देयर. मैंने थाने स्मॉल सेंटर चूज कर लिया था. सर, अब मैं क्या करूँ सर? अब मैंने क्या करूँ सर? आई हैव सिलेक्टेड थाने एज अ स्मॉल सेंटर. नाउ व्हाट शुड आई डू? नाउ कैन आई चेंज इट? कैन आई चेंज इट? अब दो चीजें होती हैं इसमें, अभी तक के पास हिस्ट्री में हुआ है, इस बार भी हो सकता है आपके लिए. नाउ फर्स्ट थिंग, एवरी टाइम आईसीआई ओपन्स अ पोर्टल टू गिव अ चॉइस टू अ स्टूडेंट टू चेंज द सेंटर. हर बार आईसीआई पोर्टल ओपन होता है और वहां पे आपको ऑप्शन आएगा टू चेंज द सेंटर. कब आएगा? आइदर यू विल बी अपडेटेड वाया मेल और यू विल बी अपडेटेड वाया माय व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप. कम्युनिटी ग्रुप की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पे मैं अपडेट कर दूंगा अगर अपडेट आया तो, और ऑप्शन आया तो चेंज करने का. ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 2 विद सेट्स आईसीआई खुद बोलता है कि सर, मेरे को किसी बच्चे को यार मन हो रहा है कि सर अब मेरे को सेंटर चेंज करना है, तो क्या मैं सेंटर चेंज कर सकता हूं? द आंसर इज यस. हाउ यू कैन चेंज द सेंटर आउट? इट सेज इफ यू वांट टू चेंज द सेंटर, it says, but wish to change a small center, you can drop us a mail on cajobs@ici.in. आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हो. आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हो. सेकंड ऑप्शन, सर मेरे को मन हुआ चेंज करने का. नाउ सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने 10 सितंबर लास्ट डेट दी गई थी, बट स्टिल यू कैन पुट इट आउट योर मेल सो दैट एटलीस्ट योर सेंटर कैन बी चेंज्ड आउट. सर, बट मेरे को थोड़ा सा आप एनालिसिस करके बता सकते हो कि विच ऑल कंपनीज, हाउ मेनी कंपनीज आर कमिंग टू द रिस्पेक्टिव सिटीज एंड सेंटर्स आउट. तो यस, वेरी गुड, आई हैव डन अ ग्रेट एनालिसिस फॉर यू गाइस. लेट मी जस्ट शो इट टू यू. So this is a small analysis which I have done. Just let me just zoom in so that people can see it out properly. Right, zoom in हो गया. So total around how many companies are coming? Let me just come to the count of companies. अगर मैं एक्चुअल कंपनीज की बात करूं, अभी तक के 45 कंपनीज, यू कैन सी द 45 कंपनीज हैव रजिस्टर्ड टिल नाउ, राइट. 45 कंपनीज हैव रजिस्टर्ड टिल नाउ, दैट इज व्हाट द काउंट इज. अगर मैं टोटल कंपनीज बात करूं डिफरेंट सेंटर वाइज, तो इट इज 65. नाउ इफ यू कुड सी देयर आर 20 सेंटर्स. इफ आई टेक द टोटल, देयर आर 20 सेंटर्स. उसमें से सबसे ज्यादा कंपनीज जो आ रही हैं अभी तक के कोयम्बतूर में है, देन वडोदरा, थाने, नोएडा, इंदौर, right, and you can see the city wise bifurcation which is there. Few centers where no companies have registered till now, you can see it out 0 in front of your screen. So there are 20 centers out of which you can select any one of them. अच्छा सर, ये लिस्ट वाइज मैंने एक चीज अच्छी की है, ये पिवट टेबल एंड द फाइल विच इज देयर. आई ट्राई टू शेयर दिस फाइल विद यू गाइस इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. ये डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको ये टैब और ये फाइल मिल जाएगी. यू कैन जस्ट गो देयर एंड डाउनलोड इट. व्हाट यू आर थिंकिंग फॉर? फटाफट कर लेंगे इसे डाउनलोड, ताकि आपको एक एनालिसिस करने में एक छोटा सा आपको हेल्प हो जाएगा. तो आपको सेंटर वाइज डिटेल मिल गई है और ये बाकी आपको ब्रेकअप मिल गया कंपनीज रिगार्डिंग. ओके सर, आई गॉट दिस डिटेल. नाउ बेस्ड ऑन दिस, कैन यू डिसाइड द कंपनीज व्हिच कंपनीज टू जॉइन इन एंड व्हिच सेंटर टू चूज इन? यस, यू कैन ट्राई इट आउट. यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द सेम. बैंग ऑन, ग्रेट. तो सेंटर में चेंज कर सकता हूँ क्या? ये मैंने बता दिया. द नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑल डेट्स आई विल बी गेटिंग अ शॉर्ट लिस्टिंग. नाउ लेट मी अगेन जस्ट ड्रॉ अ टाइमलाइन सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन अ बेटर मैनर. आई होप यू विल बी ऑल्सो ड्रॉइंग दिस टाइमलाइन. तो very very important, the first shortlisting, the first round of a consent given by the candidates will be 28th and 29th of September. So your first shortlisting will be 28th and 29th of September. सर, इस तारीख को रहेगा आपका 28 और 29 ऑफ सितंबर को शॉर्ट लिस्टिंग. अच्छा, अब इसमें सर क्या ये सेंटर वाइज ही रहेगा? से फॉर एग्जांपल आई नीड टू बी देयर ऑन द सेंटर फॉर द रिस्पेक्टिव सिटीज. देखो, अब इस केस में ना, इस बार स्मॉल सेंटर्स में 2 ऑप्शंस आर गिवन टू द कंपनीज. द कंपनीज कैन आइदर गो फॉर फिजिकल और इट कैन गो फॉर अ वर्चुअल, बट डिपेंडिंग ऑन व्हाट ऑप्शन द कंपनी इज गोना बी ऑप्टिंग फॉर, दैट इज गोना बी गिवन टू यू. आई डोंट नो, राइट, द पीपल दोस हु हैव अपीयर्ड फॉर अ कैंपस, you will be able to see the details as and when it is going to be updated in your portal. जैसे स्मॉल सेंटर का आ जाएगा, यहाँ पे आपको डिटेल दिख जाएगा कि फेस टू फेस है कि वर्चुअल. बट कंपनीज को भी ऑप्शन दिया जा रहा है कि भैया आपको फिजिकल चाहिए वर्चुअल. जब बिग सेंटर का हो रहा था, मोस्टली द कंपनीज वर गिवन अ चॉइस ओनली टू ऑफर अ फिजिकल, बट नाउ इन अ स्मॉल सेंटर, राइट, दे आर गिवन बोथ द ऑप्शंस, आइदर फिजिकल और वर्चुअल, व्हिच इज देयर. सर, द फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग मुझे कब आएगी? सर, फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग आएगी 28 और 29 ऑफ सितंबर को. आई नीड टू बी वेरी केयरफुल. ओपन माय पोर्टल, चेक इट आउट व्हिच ऑल कंपनीज हैव शॉर्टलिस्टेड मी. बैंग ऑन सर. सर, इसमें राइट, फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग डन. ओके सर, सेकेंड शॉर्टलिस्टिंग कब आएगी मुझे? सेकेंड शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट नीड टू गिव अ कंसेंट ऑन 1st and 2nd ऑफ अक्टूबर, राइट. तो सेकेंड शॉर्टलिस्टिंग आपकी आ जाएगी. ये फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग है. ओके सर, फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग. सेकेंड शॉर्टलिस्टिंग यू विल गेट इट आउट ऑन 1st and 2nd ऑफ अक्टूबर.
ओके सर, ओके. डज द सेम रूल ऑफ अ 4 अप्लाइज? यस. मतलब क्या? द टोटल शुड बी 4. द टोटल शुड बी 4. आइदर यू कैन गो फॉर 0, 4, right? 1, 3, 2, 2, right? 3, 1, 4, 0. The same rule which we have seen in the bigger campus, right? कि टोटल हमारे 4 होना चाहिए, तो इस हिसाब से आपका शॉर्टलिस्टिंग, आपको टोटल काउंट पे कंसेंट देना है. दैट इज व्हाट इज गोना बी हैपनिंग, राइट? जो मैंने बिग सेंटर के लिए अप्लाई समझाया गया था, सेम आपको स्मॉल सेंटर के लिए रहेगा. सर मुझे नहीं पता कैसे ये वर्क करता है. वेरी गुड, नो प्रॉब्लम. आप आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, यू विल गेट अ डिटेल आउट ऑफ इट. सर बैंग ऑन, ये चीज मुझे समझ में आ गई. Now after this is done, right, the dates of interviews are also mentioned here, कि which all will be the dates of interviews, which is mostly, right, sorry, यहाँ पे आपका aptitudes और इसका dates है, and the interview dates are mentioned here on the top. Interview dates are mentioned here on the top. If you could see it out, these are the interview dates which are there. These are the interview dates which are there. 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, and all these dates which are there, and you can see it out based on the city you're shortlisted. तो ये आपका एक पूरा एंड टू एंड प्रोसेस रहेगा स्मॉल कैंपस का. इजी सर, नो प्रॉब्लम. नाउ लेट मी जस्ट कवर फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेरीज व्हिच आर देयर. सर, सर, नंबर 1, सर आई डिड नॉट गॉट अ जॉब इन द बिगर सेंटर, राइट? बिग सेंटर में मुझे जॉब नहीं मिली, आइदर वॉट एवर रीजन विच इज देयर, right? What is the probability or what is the chances that I might get a good company in the off campus? I don't know, I can't say it out, but I would say one thing: you need to start preparing well, and you need to start applying off campus. Number 1. Number 2, majority of the vacancies you will get it out. कैसे मिलेगी आपको vacancies guys? Via references. आपको references के through vacancies मिलेगी. Now sir, there are a lot of students those who are not getting a jobs because they are doing a hell lot of mistakes when they are not preparing well, right? अब मैंने है ना YouTube पे आपके लिए बहुत अच्छे काम किया है, but the problem is many of you don't watch some of the videos which I am just working really hard for you guys so that you guys can get a great job offers. Now if you have not got any of the interviews और आपको अगर नहीं आ रहे सर, तो आपको सबसे पहले ये वाली वीडियो देखना है, नॉट गेटिंग जॉब्स फॉर May 24. वन ऑफ द बेस्ट वीडियो, 2 घंटे का वीडियो है. इज्जत से देखोगे तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी है दैट यू विल गेट सिलेक्टेड. ये वाला वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ. सेकंड, देयर आर फ्यू गुड वीडियोस आउट कि हाउ डू यू गेट अ मोर कॉल्स ऑन नौकरी एंड लिंक्डइन. ये वाला आप वीडियो देखिए, राइट? इससे आपको काफी एज मिल जाएगा. और अगर आप सीरियस है अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन को लेके, सर आई रियली वांट टू प्रिपेयर वेल एंड आई वांट टू गेट इनटू द बेस्ट कंपनीज ऑफ अ वर्ल्ड, राइट? द लास्ट बैच फॉर अ May 24 series, the last batch for a May 24 series, that is getting interview ready batch number 66 is going to be starting from 23rd of September. 23 सितंबर से हमारी लास्ट लाइव बैच आ रही है, which is more going to be a placement specific batch, जहाँ पे मैं ज्यादा कोशिश करूंगा कि जिनकी जॉब नहीं लगी आप बढ़िया से आप प्रिपेयर करें और अच्छे से आपको हम हेल्प कर पाए, सो दैट यू कैन गेट इनटू द बेस्ट कंपनीज ऑफ वर्ल्ड. वी कैन हेल्प यू आउट विद whatever thing is needed in the terms of community, in terms of learning, in terms of guidance. So 66th batch is there, you can register for it. पुराने batch of students भी आ सकते हैं इसमें. कैसे आएंगे उनको मैं separately mail के through you will be updated it out how you will be able to register for the same. But the registration for this is batch is started. If you're serious and if you genuinely want a job, then only join this batch. Otherwise no need. अगर आपको टाइम बचाना है और तुरंत प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ GR 65th बैच, इज अ रिकॉर्डेड बैच. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट इज. इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरीज रहे, डाउट्स रहे रिलेटिंग टू द स्मॉल कैंपस और एनीथिंग यू हैव इन योर हेड एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट आउट, इफ यू आर वरीड अबाउट एनीथिंग, पुट इट आउट इन द कमेंट सेक्शन. विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज एंड गाइज आई वांट यू टू गेट इनटू द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड. रिमेंबर, व्हाटएवर इट टेक्स, साम दाम दंड भेद, जो लगाना पड़े लगा देंगे और कोशिश करेंगे ट्राई टू गेटिंग इनटू द कंपनीज ऑफ वर्ल्ड. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.